आप यूएई में स्कूल की फीसेस से परेशान हैं? इफ दैट इज द केस, यू आर वाचिंग द राइट वीडियो। हम आज डिस्कस करते हैं कि आपको वाकई इतने महंगे स्कूल्स में भेजने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, स्पेशली इन यूएई या किसी और मुल्क में भी, लेकिन हम स्पेसिफिकली आज यूएई की बात करेंगे जहाँ पर स्कूल फीसेस स्काई रॉकेटिंग है। किसी पेरेंट के पास अगर 2 या 3 बच्चे भी हैं तो वो परेशान है कि उनके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो वैसे ही बहुत हाई हैं, और ये स्कूल की फ़ीस सबसे बड़ा फैक्टर है उनके लिविंग एक्सपेंस के अंदर। लेट्स डिस्कस कि वाकई इतने महंगे स्कूल्स के अंदर भेजना ज़रूरी भी है या फिर उन्हीं पैसों को आप बचाएं ताकि उनकी हायर एजुकेशन में बच्चों को यूज़ कर सकें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है और मैं इस यूट्यूब चैनल से पब्लिक में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियोस रेगुलर अपडेट कर रहा होता हूँ। मेरी एनालिसिस रियल लाइफ सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है। आई एम जनरली टारगेटिंग साउथ एशियन एक्सपर्ट्स इन द गल्फ, but these tips can easily be implemented all over the world. So basically Dubai is a very a vibrant city, और इसके अंदर आप easily you can get carried away because यहाँ पर spending के बहुत सारे chances होते हैं, और generally the population here is very young. The avenues are also there for the spending. Generally होता क्या है कि लोग अपनी youth के अंदर दुबई आते हैं और at that time they don't have any major liabilities, और उस वक्त इवन शादी भी नहीं हुई होती बहुत सारे लोगों की। They don't even have any major issues. I'm talking about white collar workers here, not specifically blue collars. तो back home जो इनकी responsibilities होती हैं वो उसको देख रहे होते हैं। लेकिन let's say once you go come here and in your let's say mid 20s and then you go forward and then get married, उसके बाद आपको रियलिटीज़ का आइडिया होता है। फिर यहाँ पर लेट्स से आपके बच्चे होते हैं तो 4-5 साल बाद आपको आइडिया होता है कि अब इनको स्कूल भी भेजना है। जब स्कूल भेजते हैं तो आपको पता चलता है यू गेट टू रियलाइज दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर। उसकी रीज़न ये है कि दुबई के अंदर जो सैलरी रेंजेस हैं वो दे वेरी अलॉट फ्रॉम 10,000 दिरहम टू 50,000 दिरहम टू 100,000 दिरहम्स पर मंथ। तो उसी हिसाब से स्कूलिंग भी अवेलेबल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको, क्योंकि ये टैक्स फ्री कंट्री है एंड यू डोंट गेट द बेनिफिट्स इफ लेट्स से यू आर लेड ऑफ, you have to go back to your home country. So I would always suggest someone who is coming here to save at least that proportion of the salary which they will be taxed in a western country. तो उसके हिसाब से आप अगर इवन 10,000 दिरहम मिल रहे हैं या 20,000 दिरहम मिल रहे हैं या 50,000 दिरहम मिल रहे हैं या 70,000 दिरहम मिल रहे हैं, you have to save अकॉर्डिंगली। बहुत सारे केसेस के अंदर स्कूलिंग इज पेड बाय द कंपनी इफ यू आर हैविंग अ वेरी नाइस सैलरी इन द ब्रैकेट ऑफ लेट्स से 30 to 60-70,000 दिरहम्स, यू माइट ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ स्कूलिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अपर सीलिंग है आप उसको पूरी आप उसको यूटिलाइज करें। द रीजन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस इज दैट आई हैव सीन पीपल who are going above and beyond the allotment they are given in terms of schooling, वो उससे भी ऊपर जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आप जब अपने बच्चों को महंगे स्कूल्स में भेजते हैं तो उनके एक्सपेंसेस भी उसी तरह से बढ़ते हैं। नॉट ओनली द स्कूल फीस, दे हैव एसोसिएटेड एक्सपेंसेस एज वेल, एंड देन वंस दे गो इनटू दैट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ किड्स, तो वहाँ पर लेट्स से फॉरेन ट्रिप्स भी होते हैं और वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो दे आर मनी इंटेंसिव। Let's say if you have a ceiling of 20,000 dirhams for the kids to attend the school, for one kid to attend the school, you stick to it, और उससे कम ही पे जाएं, उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि अगर उससे ऊपर जाएंगे आप तो I'm sure you will be spending a lot more than what you were expecting. प्लस उस स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके अंदर भी जो आपकी कॉस्ट होगी वो भी पड़ रही होगी। और इमेजिन अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो फिर उसके अंदर उस कंडीशन में क्या होगा। ये तो बात हो रही है जिस केस के अंदर आपको स्कूलिंग मिल रही है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल क्लास पीपल जहाँ पर आपको स्कूलिंग के पैसे भी नहीं मिलते और आपकी सैलरी भी कम है। तो उस केस के अंदर तो आपको किसी सूरत भी जो है ना एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। आप अपनी को एक फिक्स परसेंटेज बना लें कि इस वैल्यू को आपको देना है बच्चों को एजुकेशन, बिकॉज आजकल तो होम स्कूलिंग भी बहुत पॉपुलर है और बहुत सक्सेसफुली बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और आई एम नॉट अ बिग proponent of homeschooling, but still it's there and it's been worked out. उससे बेहतर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप अपने बच्चों को कम फीस वाले स्कूल्स में भेजें and then you give time to them by yourself, or you can have cheap tuitions also from countries like Pakistan and India. There are many services like that. Online nowadays, it's because of the pandemic, it's completely changed the world. For last 1 year, online education is one thing as well, which is coming with accountability too.
दूसरी बात यह है कि आप जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजना शुरू कर दें जस्ट एट द टर्न 3, बिकॉज वैसे जो नॉर्मल रेगुलर एज है स्कूल भेजने की वो ग्रेड 1 से आप नॉर्मली स्कूल भेज सकते हैं। उससे पहले भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। देर इज नो हार्म इन इट, but let's say if you are not able to spend that kind of money on pre-nursery or nursery or kindergarten stuff like that, then there is no need to sending the kids right away. So मेरी वीडियोस बनाने का बेसिक मकसद ये होता है कि मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन और सिनेरियोज के बारे में एजुकेट कर सकूं। इन केस आपके माइंड में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, डू मैसेज मी। आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो माई ईमेल इज देयर, or you can mention in comment section. I'll get back to you. So let's discuss the solution about this problem, because expensive schools, yeah, even normal schools being expensive is a menace to the society, and they're not helping anybody right now. स्पेशली द साउथ एशियन कम्युनिटी जिसकी एक मिडिल क्लास इनकम होती है और उसके अंदर वो दे आर स्टक विद द रेंट एंड द स्कूल फीस। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना है कि एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, ये वर्थ हैं? आई वुड से दे आर स्लाइट बिट ऑफ वर्थ। थोड़ा बहुत तो उसमें फ़ायदा है डेफिनेटली जब भी वो उसकी प्राइस ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा कि नहीं होगा उसके लिए आप क्वेश्चन ये करें कि जो आपके इस वक्त की एक्सपेंसेस हैं और जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट इस वक्त है उसके जो एक्सपेंसेस हैं आप कंपेयर करें। आपको शायद ये फील हो कि आप जो इस वक्त फीस पे कर रहे हैं स्कूल्स की वो इवन इट्स एट द सेम लेवल। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से मेडिकल स्कूल। मैं अपनी फैमिली में मेंबर को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को कराची के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया, एंड दैट टू ऑन ओवरसीज कोटा बिकॉज ही डिडंट गेट द मेरिट। उसकी जो कॉस्ट है मेडिकल स्कूल की वो है $12,000 पर ईयर। तो अगर 5 लेट्स से उसको वी आर टॉकिंग अबाउट दिरहम्स, तो इट्स अराउंड 45,000 50,000 दिरहम्स पर ईयर। इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेंसिव स्कूल्स इन दुबई, आई कैन टेल यू देयर आर स्कूल्स व्हिच आर नॉर्मल एंड दे कॉस्ट अराउंड 40,000 to 50,000 दिरहम्स पर ईयर। सो आप अपना फैसला करें कि आप इतना महंगा स्कूल अफोर्ड करने की जरूरत क्या है आपको, कि आपको जब इवेंचुअली आपको यूनिवर्सिटी भेजना है तो वो बच्चा हो सकता है स्कॉलरशिप लेके चला जाए ऐसी जगह पर अगर आपने अच्छी स्कूलिंग की हो। लेकिन स्कूलिंग एट द स्ट्रेच ऑफ 10 years, let's say, you are spending a lot of money. I think better off sending them into less expensive schools. You don't have to send somebody to 50,000 or 40,000 dirham school, let's say. You can send them to 20,000, 15,000, 10,000 even. I've seen schools. और वो बच्चे जो सस्ते स्कूल में जा रहे हैं और जो महंगे स्कूल में जा रहे हैं, there is no guarantee for both of them कि वो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो it's up to you कि आप अपने बच्चों के अंदर किस तरह की वैल्यूज डालते हैं और अपने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स नॉट द स्कूल कि आप 50,000 दिरहम स्कूल में दे रहे हैं तो वो आपके बच्चे को पॉलिश करके निकालेगा। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। So better to save that money right now, invest in a good place, and then prepare for that time when they start going to the university. उसके अंदर आप जितना भी पैसे यूज करेंगे वो आपको definitely they would give you back. But schooling के अंदर क्योंकि वो इतने छोटे लेवल के ऊपर आप इतना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, in my opinion it won't get you that kind of return. एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी कंपनी आपको अलाउंस दे रही है तो should you have to utilize all that allowance? I think no, because मतलब अगर आपकी कंपनी लेट्स से 20,000 पर ईयर पर चाइल्ड दे रही है तो आप जरूरी नहीं कि वो 20,000 पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वुड बी अदर एक्सपेंसेस लाइक बस फीस व्हिच इज नॉट ऑलवेज कवर्ड बाय द कंपनी। सो बिकॉज ऑफ दैट rather than utilizing the full 20,000, go for 15,000 or 10,000 dirham स्कूल, एंड उसकी वजह से बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके कट डाउन हो जाएंगे। और that amount which you are saving in other expenses, you can use it elsewhere, or you can even use that amount investing somewhere. अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि what is the best age to send kids to school? उसमें यह है कि आप देखें कि grade 1 तक मैंडेटरी नहीं है कहीं भी यूएई के अंदर कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अगर आप समझते हैं कि आप अपने घर में रहते हुए अपने फैमिली के थ्रू बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं until the age of 6, तो बेहतर ये है कि आप घर में रखें उनको। अगर आप समझते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता इस तरह से तो फिर आप स्कूल भेजें, लेकिन अगेन बी कॉस्ट कॉन्शियस। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि दुबई स्कूल्स की जो स्टैंडर्ड है वो इफ यू कंपेयर विद अदर स्कूल्स इन द रीजन, लेट्स से पाकिस्तान और इंडिया, it's much better in terms of facilities. I'm not talking about the curriculum right now. So even if you're sending it to the low cost school,
bare minimum facilities are there. So it means that at least the air conditioning is there, they have some kind of playground to play there and stuff like that. So bare minimum facilities are there. Because of that, you're not depriving of that kind of facilities. So बाकी जो studies की बात है वो of course you have to look yourself, because school plays let's say 50% of the part, 50% is being played by the parents and home. बाकी I have seen schools in Dubai which are, let's say, starting from 7 to 8,000 dirhams per year up till 150,000 dirhams per year. So it all depends on you, how much you want to spend on the schooling. Because what I have seen so far, expensive schools are not always the best schools. So it's also the home environment and how you interact with your kids that gives them the self-confidence. Because nowadays the soft skill that is more important right now with for the kids is the self-confidence. They have to be confident enough to face the fierce world. Now another point is that you have to keep motivating the child while sending them into the less expensive school. You will save some money, get that money and enroll them in different kind of sports activities, different other kind of activities, let's say robotics, or let's say sports, football, cricket or whatever. तो उससे ये होगा कि उनका they feel more energetic, they have more time to spend in extracurricular activities. क्योंकि confidence और extracurricular activities बहुत important है. अगर आप important universities की बात करें तो बहुत सारी universities they give the admissions to the children who are having more extracurricular activities rather than only seeing their grades. So grades are important, but your child should have more skills in other activities as well. Apart from sports, there are activities like let's say even YouTubing, things like currency collection, let's say things like programming. So it all depends on the child. बाकी आखिरी point ये कि इसके अंदर after Corona I have seen a lot of changes in education world. मैंने इसमें ये भी देखा है कि being in UAE, आप होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, आप होम स्कूलिंग करें. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पूरा वक्त घर में रखें बच्चों को, या फिर आप किसी सस्ते स्कूल में आप एडमिशन करा दें और आप जो ट्यूशन्स पढ़ाएं उन बच्चों को वो पाकिस्तान से बेस्ट इन क्लास ट्यूशन सेंटर से पढ़ाएं या फिर बेस्ट इन क्लास ट्यूटर से पढ़ाएं. क्योंकि आजकल जिस तरह सिनेरियो चेंज हो गया है उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस जो कन्वेंशनल कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स होते थे वो भी अब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं. यू कैन हैव वेरी गुड टीचर्स एंड कोचिंग सेंटर्स इन वेरी गुड प्राइसेस विच आर वैल्यू फॉर मनी बीइंग इन यूएई. अपना बहुत ख्याल रखें एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर.